हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 में होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए टोटल ब्रीफली आपको 50 अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQ बेस्ड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको टोटल 50 MCQs मिलेंगे विद वन लाइनर, जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या किसी भी रीज़न से आप कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ें डिटेल में मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम कैसे देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा 3 घंटे का। आगे बढ़ते हैं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQs अकाउंटेंसी का फॉर अक्टूबर एंड नवंबर एग्ज़ाम। चलिए बिना वीडियो को स्किप किए आगे हैं। पहला पॉइंट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ प्राइवेट कंपनी इज डैश 50. The next point is, one person company can have a maximum of how many directors? 1. Third point is, a company that restricts the right to transfer its shares is known as private company. Next point is, the liability of shareholders in a company is dash limited. Next point is, which document contains the rules and regulations for the internal management of a company? Article of Association. Next point is, the minimum number of members required to form a public company is dash 7. Next point is, a company incorporated by a special act of parliament is known as a government company. Next point is, who appoints the first director of a company? Promoters. Next point is, the dash type of company can issue debentures to the public? Public company. Next point is, the maximum number of members in a public company is dash unlimited. Next point is, the process of converting a private company into a public company is known as dash conversion. Next important point is, the first meeting of the board of directors of a company is known as the dash board meeting. Next point is, the capital of a company is divided into dash shares. Next point is, the dash company cannot issue shares to the public and restricts the transferability of its shares. Private company. Next point is, dash errors will not affect the trial balance. Error or omission. Next point is, a payment made to a creditor was debited to the creditor's account but credited to the bank account. What type of error is this? Error of commission. Next point is, if a purchase of equipment for rupees 5,000 was debited to the purchase account, what type of error occurred? Error of principal. Next point is, if a purchase return of rupees 300 was recorded in the returned outwards book but not posted to the supplier's account, what type of error is this? Error of omission. Next point is, dash method of accounting for goodwill involves adjusting the book value of assets and liabilities to their fair market value. Revaluation method. Next point is, when a partner's share of profit decreases, what effect does this have on their capital account? It decreases. Next important point is, in a partnership, how are profit and losses shared among partners according to the profit sharing ratio? Next important point is, which of the following items would appear on the debit side of the trading account? And the options are sales returns, purchase returns, sales, salaries and wages.
and the correct answer is purchase returns. Next point is, what does the term net profit represent in the income statement? Answer is total revenue minus total expenses. Next point is, the Indian Partnership Act was passed in dash 1932. Next important point is, DBMS stand for dash database management system. Next important point is, dash are meant to create the SQL compatible query statement, store data and retrieve both data and information. Queries. Next important point is, dash is used to storing comments and accommodates 65,536 characters, and that we call memo. Next important point is, memo is used to storing comments and accommodates dash characters 65,536 65536. ये नंबर आपको अच्छे से याद रखनी है. Next important point is, dash data type stores URL and email addresses, hyperlink. Next important point is, URL stands for dash universal resource locator. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमारे इस चैनल को NIOS Academy 15 चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे. नेक्स्ट वन इज, डैश डेटा टाइप स्टोर्स नंबर्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, रुपीस और अदर करेंसी. MS Access is an example of dash desktop database. Next important point is, dash is example of server database. सर्वर डेटाबेस के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं. ओरेकल भी सर्वर डेटाबेस होता है, SQL सर्वर भी डेटाबेस होता है, एंड IBM DB2 ये भी एक तरह का सर्वर डेटाबेस है. तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो याद रखें कि ये तीनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे. आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा वही आपका सर्वर डेटाबेस का ऑप्शन होगा. या तो वो ओरेकल हो, या तो SQL सर्वर हो, या तो IBM DB2 हो. नेक्स्ट पॉइंट इज, dash chart depict relative share of different elements, pie. Next important point is, graphs and charts are dash representation of data, pictorial. Next point is, PF stands for dash provident fund. Next important point is, HRA stands for dash house rent allowance. Next important point is, dash is the amount paid to facilitate employee in acquiring on lease of residential accommodation, house rent allowance. Next important point is, dash is equals to total earnings minus total deductions, net salary. Next point is, dash is an allocation of the depreciable cost of a non-current यानी कि fixed assets over its useful life, depreciation. Next point is, pay of employees can be easily calculated and shown with the help of dash, payroll accounting. Next point is, dash is calculated as total depreciable amount upon expected useful life, straight line depreciation. Next point is, formulas start in the formula box with an dash sign, equals to sign. Next point is, header and footer button finds on the dash tab, insert tab. Next point is, dash helps the user to highlight interesting cells or range of cells, conditional formatting. Next point is, the function library is a large group of functions on the dash of the ribbon, formula tab. Next point is, the default extension of MS Access file is dash .ACCBD. ये नाम अच्छे से याद रखें. .ACCBD ये MS Access का एक्सटेंशन है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है. नेक्स्ट पॉइंट इज, DA stands for dash dearness allowance. Next point is, TRA stands for dash transport allowance. And the next one is, dash is a statutory deduction as part of social security provident fund.
आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।